Good evening, everyone. Audible? Audible? So, want to discuss more about the liver first, or want to discuss few points of the liver, then about the liver? कुछ पॉइंट डिस्कस करें लिवर के कि पहले थोड़ा और फिलोसॉफी समझना है. We have to discuss both. Point? Okay. Okay. So, let's discuss few points of liver. So, philosophy. Okay. So, let me discuss 5 points, then we'll come to the philosophy. Only 5 points. In every meridian, we are having many points. Like in the liver meridian, also we are having liver 1 to liver 14. There are total 14 points in the liver meridian, and they call liver 1, liver 2, liver 3 till the liver 14. In the sum meridian, we have only 9 points. In the sum meridian, we have 11 points. In the sum meridian, we have 21 points. In the sum meridian, we have 44 points, 67 points. In the every meridian, we have different number of points. हर मेरिडियन के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं. दे आर फिक्स्ड लोकेशन, दे हैव फिक्स्ड लोकेशन. ओके, बट आउट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, मे बी 67 पॉइंट, मे बी 44 पॉइंट, मे बी आउट ऑफ 11 points. In every meridian, there are 5 points are very important, and they called 5 transporting point. उन्हें कहते हैं 5 transporting point. For example, let's take the example of just a liver meridian. In the liver meridian, we have liver 1, liver 2, liver 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, to liver 14. But their random point, maybe liver 1, 2, 3, 4, then suddenly liver 8. Maybe in the other channel, maybe kidney 1, 2, 3, then kidney 7, kidney 10, some random point might be there. They belong to 5 element. 5 element means, suppose there is a one family. In the family, we are having 20 member, like grandfather, grandmother, husband, wife, 6, 7 brothers, 6, 7 sisters. So total there are 20 member in one family. Suppose एक परिवार में मान लो 20 लोग हैं, but the 5 are very important person. Why they are important person? Because they all the 5 having different quality. One is having quality of wood, another one is having quality of fire, third one is having quality of earth element, fourth one is having quality of metal element, and the fifth one is having quality of water element. So what we are doing in the every meridian, we are picking the 5 point having different quality. Why we are doing this? Maybe fire is more, then we can increase the water.
If the coldness is more, we can increase the fire. So that's why we need 5 points belong to 5 different elements. जैसे कि हमारा शरीर है, कभी हमें ठंड लगती है तो हमने फायर पॉइंट को स्टिमुलेट कर दिया, कभी गर्मी लगती है तो हमने कोल्डनेस के पॉइंट को स्टिमुलेट कर दिया, कभी शरीर बहुत चंचल है तो हमने स्टेबिलिटी लाने वाले मेटल पॉइंट को एक्टिवेट कर दिया, और कभी शरीर एकदम स्टेबल है, ज्यादा ही स्टेबल है और हमें थोड़ी चंचलता लानी है तो हमने वुड पॉइंट को एक्टिवेट कर दिया. इन दिस वे, in the every meridian we will be picking the 5 points, and these 5 points are called 5 transporting point. So we are having total 12 meridian. And the every meridian we can take 5 points, 5.5 point. So how many point will be total in number? कितने पॉइंट हो जाएंगे सब मिलाकर? 60 point. 60 point. It's like a remote control. Remote control. Oh, it is very cold. Increase the temperature. Oh, it's very hot. Decrease the temperature. Oh, air is not coming. Increase the air. Oh, air is coming too much. Decrease the air. So 5.5. Take one more example. Example of remote control. In the remote control, we are putting one button. We can start one channel. We are pressing another button and we can start the another channel. So in every meridian, we are having 5 points having the quality of 5 elements. Now it become very wonderful. Now you will tell, oh, there is too much heat in the liver. It's so easy now. Okay, heat is more. Set it the heat point or increase the water point. In this way, we can work. इस तरह से हम काम कर सकते हैं. So now we will start with the liver channel. So for starting first with the liver channel, I will tell you one small thing here. मैं एक छोटी सी चीज आपको कहूंगा. So 12 meridian. Meridian 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 are yang and 6 are yin. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 6 are yin meridian. In every channel, we are taking 5.1, 2, 3, 4, 5. In all meridian, we have taken 5 point. So 1 point belong to wood quality, second belong to fire, third belong to earth, fourth belong to metal, and the fifth belong to water quality. So now if we have these points, so now switch in our hand, we can increase the water. So wood means wind, fire means heat. The meaning of earth means dampness or humidity. Or in the other word, we can understand stability. The metal means dryness. In the other word, we can understand higher stability. And the water means coldness. So we have to understand the meaning of these elements. कि वुड का मतलब है विंड यानी हलचल, फायर का मतलब है गर्मी, अर्थ का मतलब है स्थिरता, डैम्पनेस, ह्यूमिडिटी, मेटल का मतलब है ड्राइनेस और डीजनरेशन. मेटल का मतलब है ड्राइनेस और डीजनरेशन और हायर स्टेबिलिटी, and the water means coldness. So now we have all the points. In the same way, in the every meridian, we have 5 points. So there are total 12 meridians.
into 5. So there are 60 points. With the help of 60 points, we can balance everything. हम सब कुछ balance कर सकते हैं. So now, wood we will draw with the green color. हम wood को green color से draw करेंगे, ठीक है? The fire will draw with the red color. Then earth will draw with the yellow color. Then we'll draw the metal. So metal can draw either with the brown color or white color. मेटल के दो कलर हैं, ब्राउन और व्हाइट. And the water we will draw either dark blue or black, so that we can understand. Okay, dark blue or black. So these are the color of 5 elements. Now one more thing here regarding the fire. There are two types of fire. One is the fire, one is the maximum fire. So we can tell heat and hotness. There are two types of fire. One is fire, second is maximum fire. So maximum fire we can draw with the orange color. If needed, we will draw with the orange color. हम इसे orange color से show करेंगे. Orange, maximum fire, like we can see the sun. It's look like orange. If you see during the sunrise or the sunset, the sun looks like orange in the color. Orange is the color of maximum heat or the hotness. Okay, so fire, red and orange both very near. All together we can consider red also. हम दोनों को मिलाकर रेड भी समझ सकते हैं, लेकिन उसमें अगर बहुत ही क्लियर डिफरेंशिएशन करना हो तो हम उसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. सो नाउ we have to discuss liver meridian in two styles. Number one, we will discuss the 5 points in the liver meridian. Style number two, we have to discuss all the points liver 1 to liver 14 because all points having some importance, right? सभी पॉइंट का अपना एक महत्व है. अभी मैं अपने ऊपर बता रहा हूं, लेकिन माय प्लान इज दिस, आई विल शो ऑल द पॉइंट ऑन सम मॉडल आल्सो, बट राइट नाउ आई विल explain, demonstrate the point on my body, right? So let's start with the 5 points. So number one point, that is liver 1. In the liver channel, number one, we have liver 1 point. Number 2, liver 2. Number 3, liver 3. Then the liver 4. Simple sequence 1, 2, 3, 4. Wood point, fire point, earth point, and the metal point. And here little change, water means that is liver 8. Liver 8. Now regarding these all points, there is one concept. The wood point will be near the tips, like we are telling about the toes of the finger, the tip of the finger, or the tip of the toes. The wood point will be near the tip. And the last point, water point, will be near the elbow or knee. So these all points will start from the tip
of toes or finger and will end on the elbow or knee. So it's very easy. Like if any patient is coming and we want to put the point, it's very easy to put the point in this part and below the knee. ये बहुत ही आसान है क्योंकि कोई पॉइंट जेनाइटल पार्ट के पास आ गया, जैसे लिवर 11 is coming near the genital part. Okay, it's very difficult to put the point near the genital part. लेकिन ये बड़ी सुविधा है कि सारे पॉइंट घुटने के नीचे और सारे पॉइंट एल्बो के नीचे। कोई यहां तक शर्ट पहना है, यहां तक पहना, थोड़ा फोल्ड किया और सारे पॉइंट यहां लग गए और घुटने के नीचे लग गए। पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा इसी से, 5 पॉइंट से। सो लेट्स सी द रूट ऑफ दिस चैनल फर्स्ट। So look at the liver channel. It is starting from the great toe. This is the liver 1. ये पहला point है. We can see these 4 points are in the line here. Very simple. In the liver channel, we are having point number 1, point number 2, point number 3, and point number 4. So they are called liver 1, liver 2, liver 3, and liver 4. And the last point, liver 8, will be on the knee. घुटने के पास होगा क्योंकि सारे पॉइंट घुटने पर खत्म हो। So just I will discuss the location of this point. This is the boot point. This is the fire point. This is the earth point, and this is the metal point. Okay, remember one thing. If we take only 3 points first, liver 1, liver 2, and the liver 3. Liver 1 is very good for lower body. Liver 2 is very good for middle body. And liver 3 is very good for upper body. This is the concept number 1. But this is not the whole concept. Liver 1 is for lower body. It means if the female are suffering with a genital problem, if the male are suffering with a genital problem, we can use liver 1. Liver 1 is the very good point, and it is the point when the female suffering with excessive menstrual bleeding. We are using liver 1. So liver 1 for lower body, for all the problem. Liver 2 for middle body. If someone is having a sudden chest pain, sudden emergency condition, we just pump the liver 2 and it will take all the emergency. It will take care all the emergency. Liver 2 and liver 3 for upper body. Liver 3 means if any problem is happening in the head region, we can use it. But remember one thing, we are using these 3 points for whole body. That concept we'll discuss very shortly. But in general, we can consider अगर एक फीमेल को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, excessive menstrual bleeding, there are very famous 2 points, both points located here. You can see my feet here. Look at my feet here. So both points located here. 1 point on this corner and 1 point on this corner. There is the liver 1 and there is the spleen 1. If we stimulate these 2 points, liver 1 and the spleen 1, this is the liver 1. On the corner of nail, it will take care all the bleeding disorders immediately. So liver 1 is on the
कॉर्नर ऑफ नेल। लेट्स टॉक अबाउट द लिवर टू। अब हम लिवर टू की बात करते हैं। लिवर टू इज ऑन द वेव मार्जिन। लिवर टू कहां पर है? वेव मार्जिन पर है। सो फ्रॉम द वेव मार्जिन वी कैन कंसिडर हाफ चुन। राइट नो यू डोंट नो व्हाट इज हाफ चुन, सो वी कैन कंसिडर व्हाट इज हाफ चुन। ये जो हमारा ये ये उंगली है ना, नाखून, इसकी चौड़ाई हाफ चुन की होती है। व्हाट इज हाफ चुन, व्हाट इज वन चुन, आई विल डिस्कस वेरी शॉर्टली। If you keep one finger here from the bay margin, that is liver 2, it is very important emergency point. If we just pump this point very vigorously, it will take care all the emergency, especially cardiac emergency. ये सारी emergency को take care कर लेगा. This is for liver body, this is for middle body. So that is the location of liver 2. Now coming to the liver 3, if you are going from the gap, we can feel the gap here. यहां पर हम गैप को फील कर सकते हैं. So there are two ways to find out. Number one, reach on the last of this gap. एकदम इस गैप के लास्ट में पहुंच जाओ. Just reach on the last of this gap. That is the location of liver 3. Or another way, keeping the two finger from this point, and we are reaching to the location of liver 3. So liver 3 will take all the problems of the head region like migraine headache, excessive heat in the head, and multiple problem connected to the head region. So Budd point, fire point, and the earth point. If there is too much heat in the liver channel, we can sedate the fire point. अगर हमारे शरीर में लिवर में गर्मी बढ़ी हुई है कहीं भी, if there is excessive heat in the body anywhere in the liver channel, we can sedate the fire point because this is the Budd, fire, and this is the earth point. Okay. I will also explain how to measure these points as per the Chun measurement. But right now, corner of nail, that is the liver 1. Next to the bay margin, half Chun from the bay margin, liver 2. And at the junction of these metatarsal bone, that is liver 3. Now we are going to the liver 4. अब हम liver 4 की बात करते हैं. So how to look at the liver 4? लिवर 4 को लोकेट करने के लिए हमें एंकल जॉइंट में जाना होगा. We have to go in the ankle joint. So let's go in the ankle joint here. Yes. Yeah. Okay. तो चलिए अब हम एंकल जॉइंट में पहुंचते हैं. So we can see this is the ankle joint here. Exactly, this is the ankle joint. The center of ankle joint, we will find one depression. That is not the liver 4, remember. In the center of this ankle joint, we are finding one depression. चलिए पहले हम इस डिप्रेशन को ढूंढते हैं. Let's search this depression. After searching this depression, I will tell you what to do. तो देखिए किस किस को डिप्रेशन मिलता है. If you look at my leg here, so this is the ankle joint. We can feel. So this is the joint. In between, I can feel the depression here. Are you able to feel this depression?
Right now we are not discussing this point. This is the stomach 41 which will come later on. इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे. ये हमारा दूसरा पॉइंट है जिसे हम स्टमक 41 कहते हैं. So I am just marking this point, but this is not our target. Okay, how many person can feel this depression? Please raise your hand. Are you able to feel it? Yes. Okay, good. Now, wonderful. Now, come here. This is the bone. The name of this bone is medial malleolus. इस पार्ट का नाम है medial malleolus. We can see this bony part. What is the name of this? Medial malleolus. Got it? So now, stomach 41 is here. Toward the stomach 41, we are going on the border of medial malleolus. हम ये मिडल malleolus के बॉर्डर पर जा रहे हैं. ये भी हमारा लिवर नहीं है. What we are doing? Now from this medial malleolus, if we draw the line, अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं. So there are 3 points in the sequence. Point number 1, point number 2, and point number 3. So this is the stomach 41. This is the liver 4. And that is the spleen 5. Okay, I will discuss once again because very important point. So we should know exact location. So this is the medial malleolus. I can divide the medial malleolus in with these 2 lines. हम medial malleolus को इन 2 लाइन से डिवाइड कर सकते हैं. Now I can feel the depression here just next to the medial malleolus. That is not the liver point. That is the point of spleen. Remember one thing. That is spleen 5, which is not our target. तो जो इस बोन से लगा हुआ पॉइंट है वो हमारा लक्ष्य नहीं है. एंड दिस इज द स्टमक 41. इन दोनों के बीच में लिवर 4 होता है. अब मैं क्यों, अगर इफ आई डू लाइक दिस, आई कैन फील द डिप्रेशन हियर. आर यू एबल टू फील दिस? If you locate this point very properly, I will tell you, you will treat frozen shoulder magically. लिवर 4 पर एक निडल डालें, फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाता है. इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस पॉइंट को लोकेट करना सही से बहुत जरूरी है. लेट्स सी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द सेम पॉइंट इन द अदर इमेज, देन विल कम बैक. अगर आपको नहीं समझ में आया, you can ask me. I will repeat this point once again. लिवर 4 में जब हम निडल डालते हैं या इंटेंसिव एक्यूप्रेशर करते हैं तो कंधा खुल जाता है. कंधा खुल जाता है. रिमेंबर दिस थिंग. ओके, नाउ look at here. So regarding the stomach 41, the stomach 41 located in the center. Regarding the spleen 5, if we see this medial malleolus, अगर हम medial malleolus को देखें,
So this is the medial malleolus. Spleen 5 just on the border of this. Now I'm turning the leg like this. So here we have stomach 41. Here we have spleen 5. In between we are having liver 4. तो जब भी आप लिवर 4 को टच करते हो तो आपको टेंडन फील होता है. यू कैन फील द टेंडन. नाउ लेट्स सी द टेंडिनस पार्ट. Look at here. So this is the medial malleolus. On the border I have spleen 5. Don't put the point on the spleen 5 because it is a very good point for fistula. ये piles fistula का point है ना. Spleen 5 is a different point. That is the point of piles and fistula. And this is the stomach 41. In between we have liver 4. Now if I keep my finger on the liver 4, if I move my leg, I can feel the tendon. मैं ये tendon feel कर सकता हूँ. This is a tendon. I am on the border of tendon. यहां पर देखो ये tendon है. So liver 4 is on the border of tendon. We can just press this point. And just by pressing the point, we will see the lots of changes happening. So this is the metal point, wood point, liver 1, fire point, liver 2, earth point, liver 3, and the metal point is liver 4. कितने लोगों को liver 4 नहीं मिल रहा? तो टेंडन के बगल में ही लिवर 4 है जी. लिवर 4 मिलना बहुत जरूरी है भाई. नहीं तो आपने लिवर 4 की जगह स्प्लीन 5 लगा दिया तो फ्री में उसका पाइल्स फिस्टुला ठीक हो जाएगा, जो हमें नहीं करना है. उसके तो अलग से पैसे लेना है ना पाइल्स फिस्टुला को ठीक करने के. Right now our target is only the shoulder pain. Only the shoulder pain. Getting my point? So now, if you not understood, you can ask again. I will tell you because I have treated many patients with suffering with a shoulder pain, needle in, shoulder pain out. Now the question comes, if the person is having shoulder pain, right or left, this point we will press right leg, even the left leg. If the right liver 4 is painful, we will put the point on the right side. If the left side is painful, we'll put the point on the left side. If the both points are painful, we'll put the point on the both side. ऐसा हो सकता है कि कंधे में दर्द राइट में हो और लिवर 4 लेफ्ट का दर्द करे. ऐसा भी हो सकता है. जिस तरफ का पॉइंट दर्द करेगा उधर लगाना. यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए. फिर आप अपनी नहीं लोकेट कर रहे तो पेशेंट का तो लोकेट कर लोगे ना. लुक एट हियर. इफ आई डू माई लेग लाइक दिस, सी कैन यू सी दिस टेंडन? क्या आपको एक टेंडन दिख रहा है? लुक एट हियर. कैन यू सी दिस टेंडन? टेंडन तो दिख रहा है ना? क्यों नहीं दिख रहा? इसी के अंदर है लिवर 4. अंदर दैट इज लिवर 4. द डिप्रेशन. ओके, अभी क्लियर है? सो नाउ लिवर 8. चलिए लिवर 8 की बात कर लेते हैं. द 5th नंबर पॉइंट, दैट इज अ वाटर पॉइंट.
Liver 8 point located at the knee joint. All the border point located at the knee or L. तो ये हमारा लिवर 8 है. अब कहाँ होता है इसे हम लोकेट करेंगे. ठीक है, ये लिवर 8 है. Liver channel is very much important because we can see liver 1, 2, 3, 4, then it's crossing the knee, then it's crossing the genital part. We can see how the liver meridian is crossing the genital part. Then it's crossing the liver. The internal branch of the liver meridian crossing the throat. Anyone is suffering with a throat problem, thyroid problem, throat infection, we can treat through the liver channel. Then it's crossing the lips area. The liver is connected with the eyes or the vision. आंखों की प्रॉब्लम के लिए हम लिवर का प्रयोग करते हैं. Then it's reaching to the head region, so we can work on the headache and the multiple problem of the head. So we are treating these all problem just by these 5 point. इस रास्ते में कहीं भी गर्मी बढ़े, इस पूरे रास्ते में आंखों में गर्मी बढ़ जाए, गले में गर्मी बढ़ जाए, गला लाल हो जाए, टॉन्सिल हो जाए, in the root if you see fire anywhere, work on the fire point, set at the fire point, that is liver 2. You can treat this entire path. Look at the path once again, because this path is very much important. So one person is suffering with the problem of the knee, the pain at the knee. We can treat these 5 points. The person is suffering with the problem around the genital part, scrotum part. मेल फीमेल के जेनाटल पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, गर्मी बढ़ी हुई है, इचिंग हो रही है. The person is suffering with the problem in the liver. The person is having cardiac problem. We can see this is passing through the heart and lungs. The person is having problem in the throat region, lips problem, vision problem, or the disorder of the brain. Now we can treat with the liver channel. Remember one thing, there is a one very famous statement, if you want to work on the brain, forget the brain, just to treat the liver. क्योंकि ब्रेन के अंदर जाके घुस के ट्रीट करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट यू कैन ट्रीट द लिवर. Even you can write liver is equal to brain. If you treat the liver, it will work on the brain. आपको ब्रेन पे काम करना है तो ब्रेन को हटा के वहां लिवर लिख दो. हीट इन द ब्रेन, कंसीडर हीट इन द लिवर. डल ब्रेन, डल लिवर. हाइपर एक्टिव ब्रेन, हाइपर एक्टिव लिवर. Whatever condition you want to treat, connect to the brain, just treat the liver, because liver channels going in the brain. Okay, there is a too much headache due to the heat in the brain. Calm down the liver heat, brain heat will be taken care automatically. तो लिवर ही हमारा ब्रेन सिस्टम से कनेक्टेड होता है. ओके, सो द वाटर पॉइंट इज लिवर 8. हमारा जो वाटर पॉइंट है वो कौन सा है? दैट इज द लिवर 8. सो लेट्स सी दिस पॉइंट. लेट्स सी दिस. पहले आप ये पॉइंट देखिए, जस्ट आई विल टेल यू हाउ टू लुक एट दिस पॉइंट वेरी एक्यूरेटली, लेकिन जस्ट यू लुक एट द लिवर 8 फर्स्ट. दिस इज लोकेटेड ऑन द मीडियल पार्ट ऑफ द नी. ये घुटने के अंदर है. नाउ वी कैन सी अदर इमेजेस. ये दूसरी इमेजेस हैं. ये मसल हैं, जैसे कि ये दोनों मसल हैं. अभी मसल के नाम याद मत रखिएगा, मैं बस ये लिख रहा हूं. सार्टोरियस मसल, ग्रासिलिस मसल, ये पीछे की मसल है. सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडिनोसिस,
No need to remember the name of muscle. So we can see the two muscle on the back side, two muscle on the front side. Liver is located in between. But how to locate exactly? The question comes. चलिए अब हम देखते हैं इसको लोकेट करने के लिए हमें पहले समझना होगा फीमर बोन, दिस इज द फीमर बोन। ये हमारी कौन सी बोन है? फीमर बोन है, द बोन ऑफ द लेग। यस, ओके। सो नाउ इफ वी लुक एट द एनाटॉमी, अगर हम इस बोन की एनाटॉमी को देखें, लेट्स सी हियर। So this is the femur bone. Now look, focus on the knee area. आपको कहाँ फोकस करना है? नी एरिया में फोकस करना। दिस इज द नी एंड दिस इज द फीमर बोन। Now in the femur bone we can see this elevated part. ये फीमर बोन का उठा हुआ भाग है। ये कौन सा भाग है फीमर बोन का? उठा हुआ भाग। इसे क्या बोलते हैं? इस भाग को बोलते हैं कॉन्डाइल। इसे क्या बोलते हैं हम? वी आर टेलिंग इट कॉन्डाइल। आई विल शो यू अदर इमेज। तो इसे कहते हैं हम कॉन्डाइल। द मीनिंग ऑफ कॉन्डाइल, दिस इज द लेटरल कॉन्डाइल एंड दिस इज द मीडियल कॉन्डाइल। ये क्या है हमारा? मीडियल कॉन्डाइल। आप थोड़ी इसकी एनाटॉमी देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। आपको बस फीमर बोन का ऐसा उठा हुआ भाग देखना है, जिसे हम क्या कहते हैं? टेलिंग इट कॉन्डाइल। इतना समझ में आ गया? ऐसे जो उभरा हुआ भाग है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्डाइल। नाउ लेट्स सी दिस इमेज वंस अगेन। एक बार फिर से इस इमेज को देखिए। सो दिस इज द फीमर बोन and this part of the femur bone is called, now if we are turning on the back side, अगर हम पीछे की ओर हम इसे घुमा दें, so we can see lateral condyle of the femur bone and the medial condyle of the femur bone। चलिए अब मैं आपको एक गूगल इमेज दिखाता हूं। आई विल शो यू द गूगल इमेज। ओके, लुक एट दिस इमेज। एक ही चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जस्ट सो दैट यू विल बी वेरी क्लियर। लुक एट हियर। So now look at this bone। ये बोनी पार्ट को देखिए। So we can see this lateral side is lateral condyle and this medial side is medial condyle।
ये वो पार्ट है जो नीचे जाके जॉइंट्स का निर्माण करता है। On the side we can see this is lateral epicondyle, and this side we can see medial epicondyle. So again I will repeat. We can see in the bottom lateral condyle, medial condyle. On the side we can see lateral epicondyle and the medial epicondyle. So our focus is medial epicondyle. अभी हमारा फोकस क्या है? मीडियल इपिकॉन्डाइल है। नाउ लेट्स कम बैक टू द अवर प्रीवियस इमेज। अब हम हमारी प्रीवियस इमेज पर आ जाते हैं। So what we have to do, we have to go on the medial epicondyle। हमें मीडियल इपिकॉन्डाइल पर जाना है और इसके पोस्टीरियर पार्ट में हमें जहां पर मीडियल इपिकॉन्डाइल खत्म हो जाता है वहां पर एक पॉइंट लोकेट करना है, दैट इज लिवर 8। नाउ मेक श्योर you are locating the point when this condyle is finished, completed. Because sometimes what we do, we locate the point on the condyle, that is different muscles, sartorius and gracilis. So let's see in my knee. See very properly, because searching this point is very tricky, otherwise you will put the wrong point. तो देखिएगा, so this is my femur bone। ये तो फीमर बोन है, and I can palpate the femur bone, and I can go like this, and I can feel the this part, elevated part. Can you feel this part? Condylar part of the femur bone. ये पटेला बोन है, इसके दोनों साइड में ये जो उभरा हुआ भाग है। So I can feel this pointed part or the medial epicondyle of the femur bone। ये हमारा femur bone है। I will palpate this and I will go on the posterior side. Okay, this is finished। यहां पर खत्म हो गया। As soon as it's finished over, that is the location of liver 8। ये कौन से पॉइंट की लोकेशन है? लिवर 8। रिमेंबर, if I am putting the point on the condyle, that is sartorius and gracilis muscle, if I am going on the back side of the medial epicondyle, so this is the semi-membranosus and semi-tendinosus। तो यहां पर पॉइंट है, कहां पर है? when the condyle is over, जहां पर ये condyle समाप्त हुआ। I can feel this point here। If I bend my knee, I will fall in the depression। जैसे मैंने घुटने को बेंड किया, मैं डिप्रेशन में चला गया। And I am extending the knee, I can feel this point here, and this is the tendinous part। ये क्या है? tendinous part है। So let's see in the other image। एक हम दूसरी इमेज में देखते हैं। Look at this image now। So this is the femur bone, and in the femur bone, we can see this is the medial epicondyle, दिस इज द पटेला बोन। ये पटेला बोन है। ये हमारी कौन सी बोन है? पटेला बोन है।
So near about we can see the patella bone is finished. Patella bone खत्म हो गई. At this level, we are finding the medial epicondyle. Now, we are going on the back side. हम इसके पीछे गए. And we are the putting point here. That is the location of liver 8. So let's see once again here. एक बार फिर से देखिए, अब आपको पूरा समझ में आना चाहिए. So this is the patella bone. ये हमारी patella bone है. The lower border of the patella bone. At this border, if I am going medially, I can feel this medial epicondyle of the femur. I am keeping my thumb, and if I bend my knee, I will fall in depression. जैसे मैंने घुटने को बेंड किया, मैं डिप्रेशन में चला गया. दैट इज द लोकेशन ऑफ लिवर 8. ये हमारे लिवर 8 की लोकेशन है. कितने लोगों को समझ में आया? So now, in the front we have sartorius and gracilis muscle. In the back side we have semimembranosus and semitendinosus. Not clear. Okay. We'll try to explain once again. देखो, पहले घुटने के नीचे आ जाओ, यानी ये पटेला बोन के नीचे आ जाओ, और ये एज्यूम करो कि हमारा लिवर 8 पॉइंट है इस बोन के नीचे वाले लेवल पर है, नियर. अब हम पटेला बोन के जब ऐसे बॉर्डर पर आएंगे, ये जो बोन है ना, ये फीमर बोन का ही पार्ट है. दिस इज द पार्ट ऑफ द फीमर बोन, एंड दिस इज कॉल्ड मीडियल एपिकॉन्डाइल. ये क्या कहलाता है? मीडियल एपिकॉन्डाइल. दिस पार्ट. इसी के एकदम पीछे हमारा लिवर 8 है. जहां पर ये मीडियल एपिकॉन्डाइल खत्म होगा, उसके पीछे ही हमारा लिवर 8 है, एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ पटेला. तो देखो, हमारा ये लोअर बॉर्डर ऑफ पटेला, इसके लेवल पर यहां पर आपको लिवर 8 मिलेगा. कहां मिलेगा? जस्ट बिलो दिस बोनी प्रोमिनेंस. इस बोनी प्रोमिनेंस के अंदर की, दैट इज द लोकेशन ऑफ लिवर 8. सी, अगर लिवर 8 की लोकेशन सही होगी, लिवर 8 इज द वेरी इफेक्टिव पॉइंट फॉर इंप्रूविंग द मेल फर्टिलिटी. लिवर 8 एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है मेल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, मेल की सेक्सुअल क्षमता बढ़ाने के लिए. बिकॉज इफ द लिवर हीट इज हायर, विल क्रिएट impotency or erectile dysfunction. So liver should be cool. Then only person will be having good efficiency or the sexual efficiency. That's why locating the liver, it is very important task, because if you are putting the wrong point, then you will not achieve the result. Just you remember few things. Number one, पहले तो ये जो हमारे घुटने की कटोरी के नीचे के लेवल पर है, पहला पॉइंट, ये हमारी घुटने की कटोरी के नीचे के लेवल पर, ये पहला पॉइंट तो ये है. और यहां पर जो बोनी प्रोमिनेंस के पीछे है, अगर आपको ना समझ में आए तो जरा गूगल में सर्च करिएगा मीडियल एपिकॉन्डाइल. व्हाट इज द मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द फीमर बोन? एक बार आपने मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द फीमर बोन को लोकेट कर लिया, ठीक उसके पीछे छुपा हुआ है लिवर 8. बैक आईज नहीं है. नो 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 नो, इट इज नॉट द बैक आईज. लुक एट हियर, लुक एट हियर. चलो मैं फिर से बताता. चलो देखो, ये बैक आईज तो बहुत पीछे है. ये तो किडनी 10 है भाई. देखो, आप जरा इसे पुश करो.
You can see this eye. You can feel the tendon here. ये जो tendon है ना, यही सेमी मेम्ब्रेनोसस सेमी टेंडिनोसस है. This is now from the lower border of the knee. If you move to the back eyes, इसी रास्ते में आपको लिवरेट मिलेगा. You will find the liverate here only. So here we can see this tendinous part. यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? This tendinous part. This is the kidney 10 and this is the liverate. In between we have this tendinous part. ये क्या है? Tendinous part. You have to come at the level of the lower border of this patella bone. और यहां पर जो आपको दिखेगा, you can see here, ये जो पार्ट है ये फीमर बोन का उभरा हुआ जो भाग है, दिस इज कॉल्ड एपिकॉन्डाइल ऑफ द फीमर बोन. व्हाट इज दैट? दैट इज द एपिकॉन्डाइल. सी, ये पैरों की बोन टिबिया बोन ये अलग है. फीमर बोन यहां तक आई है. फीमर बोन केम टिल हियर एंड दिस इज द patella. So from the lower part of the patella come like this. Liver 8 is located here only. कितने लोगों को नहीं समझ में आया? रेज योर हैंड. कितने लोगों को 50% समझ में आया? 50% समझ में आया? बी ऑनेस्ट. या गुड. क्लियर? ओके. सो दिस वाज द 5 पॉइंट्स. 60% समझ में आया? ओके. गलती का चांस है तो एक बार जब ऑफलाइन क्लास करेंगे तब मिल लेना है, तो फटाफट आपके लिवरेट लगा देंगे. So liverate. So in this way, now we got 5 points. Most of the time, liver heat is high. Someone is angry. Put the water point of the liver. Liver का water point लगा दो. अब हम बहुत अच्छी बात करने वाले हैं. Look at here. Mother-son law. What is mother-son law? So look at here. So liver 1 will generate the liver 2, liver 2 will generate the liver 3, liver 3 will generate the liver 4, liver 4 will generate the liver 8. Then after the liver 8, again liver 1, that's the 5 element cycle. Liver 1, 2, 3, 4, 8, liver 1, 2, 3, 4, 8. So liver 1 is mother, liver 2 is son. If liver 2 is mother, liver 3 is son. If liver 3 is mother, liver 4 is son. And if the liver 4 is mother, liver 8 is son. And if the liver 8 is mother, liver 1 is son. यानी इसे कहते हैं मदर सन लॉ. इसे क्या कहते हैं? मदर सन. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी हियर. So liver 1 is good. We are talking about the liver channel. We are talking about the Wood channel. Liver 2 is fire. Liver 3 is earth. Liver 4 is metal. And liver 8 is
water. In the cycle, liver 1 is mother of liver 2. Liver 2 is mother of liver 3. Liver 3 is mother of liver 4. Liver 4 is mother of liver 8. Again, liver 8 is mother of liver 1. तो जो लिवर 8 है फिर से मदर बन गया, तो लिवर 1 सन बन गया. दिस इज कॉल्ड मदर सन लॉ. इसे हम मदर सन लॉ कहते हैं. मदर सन लॉ वी आर यूजिंग in deficiency condition because mother is having only one work, to feed the child. मां का एक ही काम है, बच्चे को पोषण देना. एक ही काम है मां का. बच्चा कैसा भी हो, whether the son is good or bad, mother give nourishment to the son. So sometimes we see in the liver we are having लिवर को भी ठंडक चाहिए. If the liver is cool, then eyes will be cool. Liver need coolness. If the liver heat is very high, then we can tonify the water point of liver. That is liver 8. Okay. So now, अगर आपको लगता है कि कुछ भी बढ़ाना है मुझे लिवर में, उसके मदर पॉइंट को टॉनिफाई कर दो. ओके, नाउ यू टेल मी, one person is having weak liver, उसका कमजोर लिवर है. Okay, one person is having weakness in the liver. One person is like the characteristic of the liver is movement, doing something all the time, doing lots of activities. One person is having deficiency of wood element. Which point we can tonify? हम कौन से पॉइंट को टॉनिफाई कर सकते हैं? Which point we can tonify? If the wood is weak, we can tonify the mother point. Who is the mother point? Who is the mother of wood here? Wood की mother कौन है? The mother of wood is liver 8. If the person is having weakness of the liver, how to treat the weakness of the liver? Just by liver 8 point. One person is having weakness. Now, what is the meaning of weakness of liver? Weakness of eyes. लिवर का मतलब सिर्फ लिवर ऑर्गन नहीं होता. लिवर का मतलब होता है लिवर जहां जहां से गुजरता है. One person is suffering with a weakness of eyes. It means weakness of liver. One person is having weak vision. It means weakness of liver.
So what we'll do, we will tonify the mother point, that is liver 8. हम कौन सा पॉइंट को टोनिफाई करेंगे? हम लिवर 8 पॉइंट को टोनिफाई करेंगे. It will work on entire path of the liver. Someone is having weakness of the genital functioning. The liver channel crossing the genitals, be seen the root. तो लिवर का मतलब है जहां से लिवर चैनल जाए. टॉनिफाई का मतलब है ऊर्जा को बढ़ाना. इसे हम अगली क्लास में समझा देंगे. व्हाट इज टॉनिफाई? राइट नाउ यू फॉरगेट द टॉनिफाई. राइट नाउ यू रिमेंबर stimulate the mother point, because mother is having only one work, to feed the child. मदर का एक ही काम है, अपने बच्चे को पोषण देना. ये मदर का काम है. यस, फाइन. सो इफ वी नीड टू कूल द लिवर, अब हमें लिवर को कूल करना है. वी वांट टू कूल द लिवर. विच पॉइंट विल टेक? कैन यू टेल मी? Which is the mother point of water? वाटर का मदर पॉइंट कौन सा है? That is the liver 4. If we stimulate the liver 4, it will cool the liver. ये लिवर में कोल्डनेस को बढ़ा देगा. लिवर 4 is very important point for cooling the liver. Got it? So this is called mother son law. इसे हम कहते हैं मदर सन लॉ. ओके, अगर आंखें लाल हैं और रेड आईज, तो क्या कुछ बढ़ाना है? वो तो घटाना हो गया. देखो, दो चीजें होती हैं. देयर आर टू थिंग्स. नंबर वन, वी वांट टू फीड. व्हेन वी आर गोइंग टू फीड? ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी. कोई भूखमरी का शिकार है, उसे खिलाओगे पिलाओगे, उसे कहते हैं नरिशमेंट देना. नरिशमेंट इज कमिंग फ्रॉम द मदर ओनली. नाउ अदर थिंग, इफ द पर्सन इज हैविंग, अगर मानो कि मदर ने बच्चे को दूध पिलाया है ना. मदर इज फीडिंग द सन. वाटर इज फीडिंग द बुड. आर यू एग्री दैट आई एम टेलिंग वाटर इज मदर एंड बुड इज सन? आर यू एग्री विद दिस? ओके. तो वाटर ने फीड किया किसको? बुड को. बुड बिकम वेरी हैप्पी. वाओ. बट सपोज some person is having water deficiency. उसका वाटरी डेफिशिएंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक माँ है, प्रेगनेंसी के समय कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, खूब एंटीबायोटिक खाई, दवा के एंटीबायोटिक खाई, इंजेक्शन लिए, खूब गर्मी बढ़ गई और उसका वाटर सूख गया. हो सकता है कि नहीं हो सकता? इट माइट बी पॉसिबल और नॉट? ड्यूरिंग द pregnancy, some mother took lots of medication, injections, antibiotics
to avoid the complicated pregnancy, and because of that she got lots of heat in the body. Kidney become very big, water become very big. I'm just giving you example. So water will not able to nourish the liver, am I right or not? अब क्या होगा? ड्राई आईज। लिवर का मतलब क्या है? अब पुराने उसमें जाओ। लिवर मीन्स टेंडन्स, बीक टेंडन। लिवर मीन्स लिगामेंट, बीक लिगामेंट। जो बच्चा पैदा होगा ना, उसके लिगामेंट कमजोर होंगे, उसके टेंडन कमजोर होंगे, उसकी आंखें कमजोर होंगी, इवन माँ की आंखें कमजोर हो जाएंगी। इन दिस वे liver is not getting enough nourishment. When I am talking about liver, you just do not think liver. You make your big vision. Okay, liver means eyes, liver means tendon, liver means ligament. ये सब का मतलब liver है. So that's why mother should nourish the son. This is mother son law. अब हमारे पास कोई पेशेंट आएगा तो हम लिवर को, अगर उसके टेंडन कमजोर हैं, उसके लिगामेंट कमजोर है, उसकी आंखें कमजोर हैं, तो हम उसके वाटर एलिमेंट को बढ़ाएंगे. दैट इज कॉल्ड वाटर नरिश द वुड, किडनी नरिश द लिवर. किडनी ही लिवर को नरिशमेंट देती है. तो हम इस तरह से हम बढ़ाएंगे. नाउ I will take more example, don't worry. But right now I want to tell you control cycle. Now I want to tell you grandmother grandson. अब मैं आपको grandmother grandson लो बोलना चाहता हूँ. So let's see here. Look at the liver channel once again. So this is the liver 1. It is giving birth to liver 2. Then after the delivery of liver 2, liver 3 is coming. Who is grandmother? Can you tell me? Grandmother कौन है इन तीनों में से? So liver 1 is the grandmother, then mother and the grandson. So liver 1 is grandmother. Now let's see the other example. The liver 2 is giving birth to liver 3, and liver 3 giving birth to liver 4. So liver 2 is grandmother, liver 3 is mother, and this is grandson. तो यहां पर हमारी ग्रैंडमदर कौन हो गई? लिवर 2 become grandmother. Now in the same way, let's come to the liver 3. Liver 3 giving birth to the liver 4, and after the liver 4 there is liver 8. So liver 3 is the grandmother, liver 4 is the mother, and liver 8 will be the grandson. Now in the same way, liver 8 is giving birth to the liver 1, and liver 1 giving birth to the liver 2. So liver it is the grandmother, then mother, then grandson. तो हमारा लिवर 8 ग्रांड मदर बन गया. ये साइकिल इस तरह से चलती है. ग्रैंडमदर का मतलब है एक जनरेशन ऊपर की. So now you want to control, now you want to reduce, you want to sedate. Only grandmother is having this power to control. अब आपने बोला कि मुझे फायर को कम करना है. मुझे क्या कम करना है? फायर को कम करना है. तो देखो भैया फायर की ग्रैंडमदर कौन है, उसको स्टिमुलेट कर दो. लेट्स सी हियर.
अभी टॉन सेड इट को भूल जाइए। आई वॉन्ट टू रिड्यूस द फायर इन द लिवर। हु इज द ग्रैंड मदर? इसकी ग्रैंड मदर कौन है? सो स्टिमुलेट द लिवरेट, लिवरेट विल कंट्रोल द लिवर फायर। अब लिवर फायर का मतलब क्या है? क्या मतलब है? द मीनिंग ऑफ लिवर फायर, the heat around the knee, so pain around the knee, heat in the genital area, maybe some infection, heat in the liver, heat in the heart area, so person is having a hyper nature, heat in the throat, heat in the eyes, heat in the brain, where the liver channel is going। जहां जहां लिवर चैनल जाता है उस पूरे रास्ते की गर्मी। हीट इन द टेंडन, जब टेंडन में हीट होती है उसे कहते हैं टेंडिनाइटिस, इन्फ्लेमेशन। हीट का मतलब है गर्मी, उष्णता, इन्फ्लेमेशन। आंखें लाल हो गई तो हम क्या करेंगे? ग्रैंड मदर को जाके स्टिमुलेट करेंगे। तो ग्रैंड मदर डायरेक्ट ग्रैंड सन पर ही काम करेगी। टारगेट ऑर्गन, जैसे वो एक सिंपल समझिए, आग लगी है, पानी डालोगे ना तो आग बुझ जाएगी। ऐसे सोचोगे कि पानी पहले आएगा फिर लकड़ी पैदा होगी, फिर लकड़ी से वो अग्नि, ऐसा कुछ नहीं, वो डायरेक्ट काम होता है साइकिल में। अब आपने सोचा कि वाटर विल इंक्रीज द वुड देन वुड, इतना साइकिल वर्क डायरेक्टली। इफ देयर इज अ फायर पुट द वाटर, गेटिंग माय पॉइंट? डायरेक्ट काम होता है। ग्रैंड मदर का काम है अपने ग्रैंड सन को कंट्रोल करना, डायरेक्ट, नो इनडायरेक्ट वर्क। ना, वन मोर थिंग, आप बाद में समझेंगे कि अर्थ एलिमेंट का मतलब होता है फैट। ये आपको पता है क्या अर्थ का मतलब फैट? डू यू नो दिस? ये समझेंगे आप कि अर्थ एलिमेंट का मतलब फैट होता है। हेलो? हाँ जी। जी जी, ओके। तो मैंने बताया कि आगे चल के हम समझेंगे कि अर्थ एलिमेंट का मतलब होता है फैट, है ना? अर्थ एलिमेंट, अर्थ का मतलब प्रोस्पेरिटी, लाइक ए लॉर्ड गणेशा, एकदम बढ़िया खाता पीता, अर्थ एलिमेंट। पेट मटके जैसा मस्त, वह अर्थ एलिमेंट। द मीनिंग ऑफ अर्थ एलिमेंट इज प्रॉस्पेरिटी, इट माइट बी गुड मसल और गुड मस्त मौला, दैट इज अर्थ। ये समझेंगे हम आगे। सो राइट नाउ जस्ट फोकस, अर्थ मीन्स फैट। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? अर्थ मीन्स फैट फॉर राइट नाउ। नाउ सपोज देयर इज अ टू मच फैट ऑन द लिवर, दैट इज कॉल्ड फैटी लिवर। हमें क्या साफ करना है? फैट साफ करना है। सो नाउ लुक एट दिस। So too much fat on the liver. Earth means fat. Who can control the fat? Who can reduce the fat? कौन फैट को घटा सकता है, हटा सकता है, कंट्रोल कर सकता है? दैट इज लिवर वन। वेरी गुड, वंडरफुल। So liver one is very good point to reduce the fatty liver. As soon as you put the liver one point, जो हमारे टोस के टिप पर होता है, जो हमने अभी सब पहला पॉइंट, as soon as you put the liver one point, it will reduce the fat, cut the fat, control the fat,
बिकॉज इट इज द ग्रांड मदर ऑफ अर्थ एलिमेंट। तो हमने पहले मदर सन लॉ की बात की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कलर लगा दो। आज तो मैं आपके लिए कलर लेके भी बैठा था, लेकिन अभी तक यूज ही नहीं कर पाया। देखो सारे कलर लेके बैठा हूँ, हर पॉइंट का कलर है। कोई बात नहीं, सब यूज करें। मैंने कहा कि हर पॉइंट पर लिवर वन पर ग्रीन कलर लगाएंगे, है ना। we can just control with the color. So let's see how to color. Giving one example. तो लिवर वन ने कहा हमें लिवर का फैट कम करना है। तो कौन कम करेगा? लिवर वन। इज इट क्लियर? So this is called control cycle. We have discussed mother-son law. We have discussed grandmother-grandson law earlier, है ना? Then we have discussed insulting cycle, overacting cycle. We will discuss in the next class. आज के लिए इतना काफी है। Any questions? पेट के फैट को कम करने के लिए हमें और भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। डेफिनेटली वी कैन पुट, जैसे उदाहरण के लिए हाँ, लिवर थ्री पर हम ग्रीन कलर लगा सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों को हम समझाएंगे, डोंट वरी। यस मुकेश कुमार जी, इस्माइली जी, प्रतिभा जी, जय हिंद सर। पहले तो सर बहुत बेस्ट क्लास हुई सर, थैंक यू। बहुत ही वंडरफुल क्लास सर। बट ये लीवर 1 2 3 4 8 समझ गया है। ईट में सर थोड़ा सा डाउट है सर, कि जहाँ पर डिप्रेशन आता है वही सर ना, जो हम ये पटेला के नीचे जाते हैं बॉर्डर से, जहाँ डिप्रेशन आता है, डेट इज लीवर 8 ना सर। हाँ हाँ हाँ, जो लिवर एट है ना, तो आप ये पटेला बोन के लोअर बॉर्डर से चले जाओ, उसी लेवल पर है। यानी उदाहरण के लिए लुक एट हियर, ये जो पटेला बोन है इसके लोअर बॉर्डर से जाओ, and if we go like this we will find the liver rate at this level। फिर डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन के ऊपर है, यहाँ पर लिवर रेट है। मतलब वहां पर सर डिप्रेशन आएगा सर लीवर 8 पर सर? नहीं, हाँ, नाउ व्हाट विल डू, यहाँ हमें बोन महसूस होगी। अब पहले बोन को पकड़ लो, फिर घुटने को बेंड करो, सीधा करो, बेंड करो। बेंड करोगे तो आपका अंगूठा खड्डे में चला जाएगा, हाँ बेंड करोगे तो खड्डे में जाएगा, और सीधा करोगे तो हड्डी पे आ जाएगा। हाँ हाँ। दैट इज किडनी 10, लिवर 8। मतलब बोन के पास में सर, बोन के पास ना सर? एकदम ये मीडियल इपिकोंडाइल के पीछे हाँ समझ गया सर। है ना जी। और सर अभी आपने सर जो पढ़ाया सर ग्रैंड हम्म। मदर और ग्रैंड सन का, तो मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर पोता को कंट्रोल करना है तो दादी को कंट्रोल करना पड़ेगा, ग्रैंड मदर को सर ना? पोते को कंट्रोल करना है तो दादी को बोलना पड़ेगा कि करो कंट्रोल। सेडेट करना पड़ेगा। तो दादी को हम ट्रीटमेंट दे देंगे। दादी अपने आप पोते को, जैसे पोता कुएं की तरफ जा रहा है तो दादी को हम बोलेंगे बस सब बचाओ, तो दादी दौड़ के उसको पकड़ लेगी। नहीं तो पोता आग में हाथ डाल रहा है तो अब पोते को बोलेंगे अंदर मत डाल मत डाल मत डाल, तो मानेगा नहीं। तो हम दादी को बोलेंगे देखो 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 आग में हाथ डाल रहा है, सो दादी को हम स्टिमुलेट करेंगे, सो दादी उसको पकड़ लेगी। स्टूमुलेट मतलब कि हम 25 सेडेशन में क्या बोल सकते वो हैं वहां तो बाद में बताएंगे। अगर हम सिर्फ स्टिमुलेट करेंगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन टॉन करना की सेडेट करना है ये बताया जाएगा आपको। मेथी मेथी से ना सर, स्टूमुलेट मेथी ना? हाँ, हम मेथी से, स्टार मैग्नेट से हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। अगर आप जानते हो टॉन सेडेट यू कैन डू दैट। लेकिन बाकी लोगों को हम समझाएंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार टर्न करना है, कई बार सेडेट करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, राइट। अभी सर गुड कंफ्यूजन। इवनिंग सर। हाँ जी, बोलिए इस्माइल जी।
Sir, this is regarding you said we have all these 5 element points, no, sir, like liver 1, liver 2, or liver 3. So how do you measure, like how do we know that this point, how it is measured, sir, that here wood point is there, here fire point is there, how do you know, sir? That is given, not measured. Like आपका प्रश्न है कि लिवर 4 ही क्यों मेटल पॉइंट है, लिवर 5 मेटल पॉइंट क्यों नहीं है? Yes, yes. दिस इज गिवन, ऑलरेडी गिवन. वी आर नॉट, किसी विज्ञान से ही आया है, वो किसी कंसेप्ट से ही आया है. लेकिन वो कंसेप्ट कौन सा है? दैट इज द कंसेप्ट ऑफ आई चिंग. आई चिंग का कंसेप्ट है, हम उसे डायरेक्ट ले रहे हैं एज इट इज. ओके Okay. वो लोकेशन, जैसे उदाहरण के लिए आप इतने सारे पॉइंट्स हैं लिवर, जैसे इतने सारे पॉइंट्स हैं, उनकी लोकेशन को हम एज इट इज ले रहे हैं. हम ये नहीं समझ रहे कि लिवर 5 इधर ही क्यों है, लिवर 6 इधर ही क्यों है, लिवर 8 को ही क्यों लिया. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. डेफिनेटली देयर इज अ कंसेप्ट, बट वी आर not talking about the concept, we are taking as it is, right? Sir, here after liver 4, we directly went to liver 8. Yes, What happens to 5, 6, and 7, sir? They'll have energy or they will not have, sir? Chi. Yeah, so we have taken the 5 element point, like after the metal we have taken the water point. Yes, sir. But there are many important point in between, like liver 5, liver 6, very important point. We will discuss क्योंकि वो आएंगे हमारे, लेकिन वो 5 एलिमेंट में नहीं है. Okay. लाइक आई विल टेल यू लिवर 5, लिवर 6 एंड लिवर 7. ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है. हर पॉइंट का अपना कुछ काम है, नहीं तो दिए क्यों होते पॉइंट? देने नहीं चाहिए थे. हर पॉइंट का अपना एक इंपॉर्टेंस है, हर पॉइंट की अपनी एक कहानी है. Okay. उस कहानी को हम समझेंगे, हम सारे पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे. ओके, डोंट वरी दैट. Sir, when we're talking about liver 3, somebody asked whether can we put green. But liver 3 is an earth element, no, sir? So green, yellow, no, sir? Actually, I will explain this when I will tell about the tonification addition. Okay. Right. Okay, sir, and one more thing. How did you get this so much knowledge, sir? Hats off to you, sir. Lots of gratitude also, sir. Got so much knowledge. It's nothing like you, all of us having knowledge, and all of us having knowledge. It's not like you're feeling like that, but it's nothing like that. No, you were telling about the muscle name and tendon name, everything you are telling, no, sir? Yeah, because I have studied. Once you study, then you can also tell it. Simple. Nothing. Okay, sir. Yeah. Thank you, sir. Welcome. Yes, Jyotika ji. सर जैसे लिवर में हीट बढ़ गई तो Hmm. हमें कूलनेस करनी है तो वाटर चाहिए, तो Hmm. हम उसे वाटर पॉइंट को एक्टिवेट करें या वाटर की मदर को एक्टिवेट करें, तो फर्क क्या, हम इसमें वाटर पॉइंट को क्यों ओमिट कर रहे हैं? हाँ, एक्चुअली हम जब प्रोटोकॉल का निर्माण करेंगे तो समझ में आएगा. जब हम प्रोटोकॉल बनाएंगे ना, तो उसका एक विधि होगा. विधि कैसा होगा? सेल पॉइंट भी स्टिमुलेट हो जाएगा, मदर पॉइंट भी स्टिमुलेट हो जाएगा. हम प्रोटोकॉल का जब निर्माण करेंगे, लेकिन अगर हमें सिर्फ एक ही पॉइंट का प्रयोग करना है तो हम सिर्फ मदर पॉइंट को ले सकते हैं. लेकिन आप देखोगे कि जब हम, जैसे हमें फायर कम करना है, तो हम फायर को सेडेट भी कर देंगे और वाटर को बढ़ा भी देंगे, है ना. तो हम मल्टीपल पॉइंट्स को यूज करेंगे. हम एक और भी पॉइंट लगा देंगे, हम ऐसे 3 पॉइंट का प्रयोग करेंगे, तो सब कुछ आ जाएगा. आपने जो सोचा है ना, वो भी हो जाएगा. जैसे हमें लिवर में ठंडक बढ़ानी है, तो हम लिवर 8 को भी मजबूत कर देंगे और लिवर की मदर भी ले लेंगे. तो आपका जो सोच है एकदम परफेक्ट है. ये आगे हम करने वाले हैं प्रोटोकॉल के निर्माण के समय, है ना. लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि मदर पॉइंट का काम है बढ़ाना. तो अगर मैंने कहा कि लिवर 8 को टॉनिफाई करो, यस ठीक है, लिवर 8 को टॉनिफाई करेंगे तो वाटर बढ़ जाएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है, हम सोच सकते हैं. फिर हम बोलेंगे कि लिवर 4 को टॉनिफाई करो, ये भी वाटर बढ़ाएगा. तो आपको तब भी समझ में आ जाएगा, हाँ हाँ ये भी बात सच है, क्योंकि ये मदर पॉइंट है ना. तो हम प्रोटोकॉल का निर्माण करेंगे, तब हम ये सारा त्रिकोण डिस्कस करेंगे. ठीक है सर, कल जो आपने समझाया था कि वो जो राइजिंग होता है, उस कार की स्पीड हम स्टार्ट करते हैं तो वुड हाँ से स्टार्ट होता है हाँ ना? तो जो जैसे जब कंसीव होता है तो कंसेप्शन होता है, फिर प्रेगनेंसी पीरियड चलता है, फिर डिलीवरी, बर्थ तो डिलीवरी पे हुआ, तो वो जो कंसेप्शन है और प्रेगनेंसी का पीरियड है वो भी वुड में आता है? No. Actually, what I will tell you, when we talk about the 5 elements, the 5 elements is like this. Like we are having wood, fire, earth, metal, and water.
Then we can do subdivisions. In the wood also having, we have wood, fire, earth, metal and water. Then we further go in the subdivision. In that also we are having wood, fire, earth, metal and water. When fetus is growing in the mother womb, also following all the stages of the 5 elements. So that's why when एलिमेंट में भी सब एलिमेंट है सब एलिमेंट में भी सब एलिमेंट्स है ना. For example, liver is the wood, heart is the fire, spleen is the earth. Okay, so lung is the metal, kidney is the water. So let's come back to the liver. Liver is a wood. Now we are going in the liver also. Liver 1 is a wood, liver 2 is the fire. Be going inside now. Now in the liver 1 also there is a subdivision, but we will not go till that level, not required. But that subdivision can be go till the infinite level. Because this is an energy concept now. Energy concept. It makes sense. It makes sense. So like for example, one male and one female. We are telling male is yang and female is yin. Okay. Now female is coming. One muscular female and one soft female. So muscular female is yang and soft female is yin. So this is, we can go, okay, male, female, one division. Female in the female, we can do the further subdivision. So there is a, might be infinite subdivisions. These all things. Are you getting my point? Yes, sir. Okay. सर लास्ट पॉइंट जो अभी आपने लास्ट सर को बताया था वो लिवर 8 का पॉइंट, तो हम जैसे मीडियली आ गए वो सेमी मेम्ब्रेनोसिस टेंडनोसिस के, उसके एंटीरियर पे डिप्रेशन में लिवर 8 और पोस्टीरियर के डिप्रेशन पे K10 है, ये कह सकते हैं? Yeah, right. So the question is this. Yeah, I'm speaking in English so everyone can understand. Okay. So the question is this, how to look at the point as per the muscles name. Yeah, so you're right. So I will repeat here once again here. Let's see this. So this is the, we can feel there is a depression, that is the kidney 10. And in front of this depression of the kidney 10, we can see these two tendon, semi-membranosus, semi-tendinosus. And then we have liver 8. So then we have, so on the one side we have liver 8, on the other side we have kidney 10. In between we have the tendon of these two muscles. So you're right. Okay. Thank you. Yeah. Okay. Any questions? Yeah. Yes, R. Gupta ji. Yeah. प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। ये जो अभी आपने पॉइंट बताए थे इनको हम ड्यूल मेरिडियंस पे लगा सकते हैं ना? हाँ, the points working very nicely, excellently in the Buell meridian. Sometime I will tell you the points are giving better result in the Buell meridian. Because when you are putting the point, if you are pressing with a probe and finding the exact tender painful point, it gives quick result, immediate results. Okay, very nice. You can work on that. और सर आपने So whether you can work on the body or you work on the Buell, that's your choice. Okay. ओके सर। एक सर आपने वो बताया था एडिक्शंस के लिए वो आपका वीडियो नाडा। हाँ, नाडा प्रोटोकॉल फॉर डी एडिक्शन। या उसको कैसे सर्च करें सर? यूट्यूब में डालिए डॉक्टर हेमंत शर्मा NADA प्रोटोकॉल। अगर नहीं मिले तो मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है। ठीक सर, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम जी। यस मंजूश्री जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर जब हम नीडल करेंगे लिवर 8 पॉइंट में तो वो अंदर घुस जाएगा या सुपरफिशियली लगाना होगा नीडल? अंदर घुस जाएगा। निडल मैं आपको बताऊंगा, निडल लगाने में बड़ा आसान है। अब 0.5 या 1 चुन के करीब कितना डीप घुसेगा उसके अंदर, कितना डीप डालना चाहिए? लुक एट दिस। चलिए इस बहाने में अपना लिवर एड स्टिमुलेट कर। So now I am pulling my liver, I am calming down my liver. So I can feel the lower part of the patella bone. And I am searching this bony prominence going on the back side.
बैक साइड That is the location of liver 8. ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਕੈਬਜ ਨਾਲ ਲਾਈ You ਸਰ can put the liver. ਉਹਦਾ ਐਵੇਂ Can ਤਾਂ you see ਵੈਸੇ this? ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ Can you see this or not? Yes, sir. Okay. So we can put half to 1 chun, no problem. Half to 1 chin. Okay. Sir, एक और question है, थोड़ा ऑफ द ग्रिड है। आपने बोला बच्चा जो है वो जा रहा है कुएं में कूदना है, तो ग्रैंड मदर को बोल रहे हैं रोकने के लिए, मदर नहीं रोकेगी? मदर बोलेगी जा कूद जा कुएं में। मदर पैम्पर As per the 5 element, मदर क्या करेगी? जैसे बच्चा कुएं में जा रहा है, मदर करेगी वाओ वेरी नाइस वाओ 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 वाओ। मदर ऑलवेज प्रमोट द सन। सर एक्चुअल में So तो kid will- ओरिजिनल में तो kid will माँ look at the back नहीं है। and kid will keep going put jump. And this is the concept of see, don't think as per your fam like कि मैं I as a mother I will hold my child. This is the 5 element concept. And the 5 element concept, if you want to control the fire, if you put the wood, fire will increase. Wood is the mother. If you put the wood, wind, अगर आप हवा फेंकेंगे तो फायर बढ़ेगी। अगर अग्नि को शांत करना है तो पानी को ही बुलाना पड़ेगा ना। तो इसलिए we have the 5 element, we have to understand this concept. Okay. Thank you, sir. Okay. सर Yes, सैमसंग जी। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर जैसे आपने फैट घटाने के लिए लीवर 1 का भी इस्तेमाल करने के लिए कहा और 3 का भी बोला है आपने, तो कौन सा करेंगे? किसके लिए? फैट लीवर फैटी के लिए सर, फैट हाँ। घटाने के लिए। तो अभी आपको ये कंसेप्ट समझ में आया ना कि फैटी लिवर के लिए वी आर फॉर द फैटी लिवर वी आर वर्किंग ऑन लिवर 1. दिस कंसेप्ट इज क्लियर? हाँ जी। But the question is this: how to make the treatment protocol? For the treatment protocol, we will choose 3 points, but that concept will come shortly, because we have to understand things step by step. Otherwise, it will be overburden on the mind and will not able to understand. I will tell you, okay, take the liver 1 tonification, liver 3 sedation, liver 8 tonification, but it will be very difficult. How? So we will proceed slowly, step by step. Okay, then we'll make. सर मैंने ना आज 3 पेशेंटों को ड्यू 20 लगाया सर, एक नीडल Okay. प्रैक्टिकल के लिए सर। Hmm. तो सर क्या हुआ, तीनों का मैंने जो कंपैरिजन किया, जब मैं उनको लगाया लीवर के लिए लगाया सर मैं उनको, तो उनको पहले वो जो अपने ऊपर लीवर के एरिया में उनको पेन हुआ, और उसके बाद सीधा नीचे पैर के तल में अड्डी में गया पेन। 2 पेशेंट हो गए सर। फिर तो कुछ देर बाद वो ठीक है, वो कहने लगे हमको कुछ हल्कापन होने लगा, बढ़िया लगने लगा सर। yeah, so actually when we put any point, whenever we are putting any point, then we can feel some sensation, some pain, some tingling, some coldness, some warmness in the target area. That is called D-chi. What is called? D-chi. D-chi means I'm putting the person is having too much coldness. I'm putting the point, person start feeling warmness. So something will happen. Even sometimes we feel after the treatment, pain will increase. But after 24 hours or 48 hours, pain will decrease and the person will feel very good improvement. Yes, sir. So these things happening, why? Because now in order they want to move, but not getting the path. So pain means blocked energy. Energy is not getting path to flow. Remember one thing, very important thing.
सर इसमें जैसे हमने ड्यू 20 लगाया सर लीवर के लिए, तो उसको सर एक तो उसको कितने मिनट रखना है, 20-25 मिनट लगाना है, तो जो वो आप बता रहे हैं क्या उसका भी 24 घंटों के बाद और भी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, ये कहना चाहते हैं ना आप? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि DO20 लिवर का तो पॉइंट है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें लिवर की ऊर्जा को बढ़ाना है कि घटाना है। हाँ सर, उसकी नीडल की वो क्या लेटरल लगानी है या किसे लगानी है सर, वो उसका भी थोड़ा होगा हिसाब किताब सर? DO20 पर हम निडल कैसी भी लगाएं, हम वी आर लिफ्टिंग द लिवर ची, जी बट जी। है ना, वी आर लिफ्टिंग द liver chi, and DO20 is a very good point. But if someone is having already high liver chi, then we have to set it the DO20 points, okay, by putting the needle in the opposite direction. So whether we want to increase the energy of liver or we want to decrease the energy of liver, if you decrease the energy of liver, person will go in the deeper sleep. If the person is suffering with insomnia, put 2-3 needle around DO20. But जी जी। how to do the tonification, how to do the sedation, this question not discussed till now. Okay, so but right now I want to tell you, DO20 is very good point, and you can definitely work on the liver chi. ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਐਕੂਪੰਚਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟੈਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੀ ਸਰ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आती। हाँ तो बोलते तो हिंदी, बीच में कितनी हिंदी बोलते हैं हम। हाँ जी, नहीं कई बार लगातार भी इंग्लिश चलती है सर, पता नहीं चलता ये कई बारी। अब देखो, जब हम हिंदी बोलते हैं ना, तो कई लोग बोल देते हैं इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, ऐसे ही जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो आप हिंदी हिंदी लिख दिया करो चैट बॉक्स में, है नहीं ना। लिखते हैं सर, हाँ तो लिखते हैं आप, सर। जैसे मैं चैट बॉक्स देखता रहता हूँ, जैसे कोई हिंदी बोलता है तो मैं हिंदी बोलना चालू कर देता हूँ, कोई हाँ इंग्लिश जी हाँ बोलता जी। है तो इंग्लिश बोलना चालू कर देता नहीं सर, बहुत बढ़िया क्लास थी, बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आया सर। और मेरे को अब कार वाला आज समझ आया, कल नहीं समझ आया सर। हूँ। कल समझ में नहीं आता। कल समझ नहीं आया, मैं सुन रहा था, लेकिन आज आपने LI1 बताया, फिर 2 बताया, उसके हिसाब से मेरे को पता चला भी ये ऐसे इस हिसाब से चलेगा हाँ, जी। कई लोगों को क्या है ना, प्रैक्टिकल ज्यादा समझ में आता है, और कई हाँ लोगों जी को हाँ जी। फिलोसफी ज्यादा समझ में आती है, जो अपना अपना इंटरेस्ट होता है ना, है ना। सर बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। वेलकम। यस, मेघना जी। सर गुड इवनिंग जिन सर। लोगों ने अपने प्रश्न पूछ लिए वो अपने हाथ नीचे कर लीजिए। या मेघना जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। लीवर इज नेवर डिफिशिएंट ना सर? लिवर इज नेवर डेफिशिएंट। नेवर, तो फिर ये सर जीवित जो है जो अभी बात चल फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, व्हाट यू आस्किंग। लीवर इज नेवर डिफिशिएंट, या मतलब हमेशा एक्सेस में। लिवर ची इज नेवर डेफिशिएंट। प्लीज टेल द फुल सेंटेंस। तो अखां लाल होंगी, गुस्सा ज्यादा करूंगा। लिवर ची जो होती है वो तो वो मतलब चीज बंदा है। ਉਹਦੇ ਲੀਵਰ प्रॉब्लम है पर फॉर एग्जाम्पल आई विल, सर किसी का माइक ऑन है तो देखो, अगर किसी को गुस्सा आया, someone is angry, liver chi will rise. Now someone is overusing eyes, आंखों का ज्यादा यूज कर रहा है, liver will be dry and weak. That is called liver yin deficiency. But because I did not discuss that, so just wait for few more time, then you will understand what is liver yin. The person might suffer with the liver yin deficiency. Person might suffer with the liver dryness, liver weakness. But liver chi is the different thing. I will tell you one example. Chi means energy. Okay. chi का मतलब होता है ऊर्जा। एक व्यक्ति एकदम दुबला पतला सूखा साखा लेकिन गुस्से से तमतमा रहा है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता। One person is very lean, thin, maybe male, female, anyone. Not having power, no muscular strength,
that he is having too much anger. That is liver chi is hyper. So liver chi is a different thing. Now regarding the liver, there might liver yin is the different thing. We will be discussing that. Liver yin might be deficient. If the person is not sleeping enough in the night, the liver yin will be deficient. लिवर सूखने लगेगा. तो क्या होता है वो हम समझेंगे आगे चल के ना. लिवर यिन क्या होता है, लिवर यांग क्या होता है, वो हम सब समझेंगे. इतना TCM इतना वास्ट है ना. If you want to become a diagnostic master, then you should master TCM. TCM means just while listening the symptom, you will able to understand the diagnosis. And once you put the point as per diagnosis, you will able to treat the disease from the root. Yes, Jyotika ji, Linshan ji, Divya ji, yes. Yes, sir, for fatty liver, liver 3 is excess and we have to tonify liver 1. You said we can also use a green color, but where one thing I would like to tell you, I did not tell that I have to tonify the liver 1. Okay. I did not use the word of tonification and sedation. I Yes. just used the word stimulation, right? Yes, sir. Right? So Now this green color, where we have to apply on liver 1 or liver 3? okay. So this is a very good question. We will apply the point. We will apply the 3 point. Okay. But right Thank you. now I told just work on the grandmother. Do not work on the grandson. We have to work just on the grandmother. Okay. But we will work on the liver 1, we will work on the liver 3, even we will work somewhere else. We will apply 3 points. That we will learn how to make the protocol. But right now, if you want to control any element, just focus on the grandmother and you can apply the green color on the grandmother. Thanks. Thank you. Someone asked that can we apply the green color on the liver 3? I told yes, but that concept I had not discussed till now. Okay? Okay. Thank you. Okay. Yes, Divya ji. सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, जैसे कि अभी हम लीवर का सब्जेक्ट ले रहे हैं और लीवर मेरिडियन और लीवर ऑर्गन के 5 एलिमेंट्स पे डिस्कस कर रहे हैं, तो ये थोड़ा ज्यादा सिस्टमेटिक होगा अगर हम सपोज लीवर विंड, ओके, सो लीवर विंड अगर एक्सेस है तो कौन से डिसीज या सिम्टम्स होंगे, या लीवर विंड अगर डेफिशिएंट है तो कौन से डिसीज या सिम्टम्स होंगे, ये भी थोड़ा अगर हम उसमें ऐड कर. हेलो. हाँ, आई एम लिसनिंग यू. वो सर बहुत और अच्छे से हो पाएगा आई थिंक. एक्चुअली ये सब आगे आएगा क्योंकि एक बार हमने वो उसे हम कहते हैं पैटर्न्स, वो पैटर्न चालू होगा ना, तो देयर आर मेनी पैटर्न लाइक लिवर विंड राइजिंग, देन इट इज क्रिएटिंग पैरालिसिस, देन लिवर फायर राइजिंग, लिवर यिन डेफिशिएंसी, ये सारे फिर पैटर्न फिर लाइन में आएंगे. एक अभी वो समझना डिफिकल्ट है क्योंकि उसको समझने के लिए व्हेन आई विल डिस्कस लिवर विंड राइजिंग, I have to tell the protocol because liver will create facial paralysis. अब facial paralysis को समझाने के लिए मुझे और भी बहुत सी चीजें समझानी पड़ेंगी क्योंकि लिवर विंड से फेशियल पैरालिसिस कैसे होगी. तो हम क्या कर रहे हैं ना कि पहले हम आपको एक समराइज कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स के बारे में. पैटर्न तो आने ही वाले हैं आप जो बोल रहे हैं, क्योंकि हमने पहले जो कई क्लासेस की हैं उसमें हमने ये पैटर्न समझे हैं. जैसे उदाहरण के लिए आप ये देखिए, आपने बात कही है ना, तो मैं आपको दिखा देता हूं तो आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा. देखिए, सॉरी, आप जो बोल रहे हैं ना, ये देखिए, ये क्या है, लिवर विंड राइजिंग. अभी ये सब समझ में आएगा. अभी मैं समझा दूं, लिवर फायर जनरेटिंग विंड, लिवर यांग राइजिंग लीडिंग टू विंड, लिवर ब्लड डेफिशिएंसी जनरेटिंग विंड, लिवर यिन डेफिशिएंसी लीडिंग टू विंड. समझ में आ रहा है क्या? यस यस सर, यस सर.
yes sir. Now this is creating too many problems. Some creating high fever, some creating temporal headache, some creating tremors, some Yes. creating. कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? हाँ 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 हाँ. अभी इसमें No, कैसे समझा दूं ये बताइए आप? yes yes yes. नहीं सर समझ में आया. है ना? स्टेप बाय स्टेप, we will go step by step. Okay? Okay sir, no problem. Yes, okay sir. Yes, नेहा जी, मधु जी. जी सर। सर माय क्वेश्चन इज जैसे आपने ये बताया है कि फ्रोजन शोल्डर का होता है, मेरा भी क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया है। हमको सर फ्रोजन शोल्डर का कैसे समझ में आया कि फ्रोजन शोल्डर है या कोई और प्रॉब्लम है? अगर शोल्डर में पेन है तो वो फ्रोजन शोल्डर है कि और कुछ प्रॉब्लम है, हम कैसे पता करें? जी। दिस इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हम उसे फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, क्योंकि मैंने बोलता फ्रोजन शोल्डर, सबको इमीडिएटली क्लिक हो गया पेन ऑफ द शोल्डर, राइट? बट फ्रोजन शोल्डर माइट बी इट इज फ्रोजन शोल्डर, माइट बी इट इज tendinitis, might be it is like arthritis of the shoulder joint, it might be brachial plexus compression, है ना? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फ्रोजन शोल्डर बोलते जरूर है, लेकिन शोल्डर के पेन कई प्रकार के होते हैं, राइट? ये सब पे काम करेगा। ओके जी जी सर। है ना? एंड सर जो हाँ। वीक विजन के लिए जैसे आपने बोला LIV 8 हम करेंगे टोन, उसके लिए सर हम जब टोन कर रहे हैं तो क्या हम बच्चों को अगर लगाते हैं तो हम वहां पे निडलिंग कर रहे हैं या अगेन वही सेम क्वेश्चन? क्यों, बच्चों को निडलिंग कर सकते हैं ना आराम से। सर लगाएं और बाय चांस 80% समझ में आया लोकेशन, बट आप अगर सामने होंगे तो लाइक वी कैन अंडरस्टैंड I will tell you, once you know how to put the needle, it doesn't matter 2 years or the 84 years. लोकेशन सर। मैं आपको भी बोल रहा हूँ, एक बार आपने पता चल गया कि निडल कैसे लगानी है, फिर एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 साल हो, 20 साल हो, 40 साल हो या 90 साल हो। नहीं सर एज नहीं सर, लोकेशन लोकेशन LIV लोकेशन की आपने एज से कंपेयर किया ना, एज 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 हो गया सर, मतलब लाइक बाय चांस अगर लोकेशन समझ में आया है बट 100% नहीं पता है कि हमें लग रहा हो सकता है हमें सही समझ में आया है, पर क्या पता गलत हो और हमने देखो गलत थोड़ा, किया तो। जितने भी हम एक्सपर्ट बनते हैं ना, थोड़ा गलती कर करके ही बनते हैं। पहली बार में कोई भी हर चीज सही कर दिया ऐसा तो जरूरी नहीं होता। धीरे धीरे ऐसा ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, सडनली कुछ हो जाएगा ऐसा कुछ, है ना? जी। रिजल्ट नहीं मिलेगा बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं सर होता। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, जो हाँ किडनी 10 है ना, हाँ 8 इस साइड है, किडनी 10 तो के बीच में 2 टेंडन आते हैं, 2 टेंडन के बीच में K10 है ना? नहीं नहीं नहीं, किडनी 10 तो पीछे है, दोनों पीछे टेंडन। तो है, जैसे हाँ लिवर 8 हमने लगाया, उसके बाद 2 पतली पतली डंडियां आती हैं, हाँ 2 हाँ। पतली पतली, तो उनके दोनों के बीच में है ना K10, I डंडियों will के, show you the location. या डंडियों की दूसरे साइड है? Let's see the location here. ये देखिए, ये है हमारी मसल सार्टोरियस, ग्रासिलिस, ये दोनों हमारे सेमी मेम्ब्रेनोस सेमी टेंडनस। और उसके पीछे किडनी 10, कैन यू सी दिस? इसके ये दोनों हमारे चारों के पीछे है किडनी 10, पीछे जो खड्डा है आंख है वही किडनी 10 है। ओके, अच्छा, ठीक है, ठीक, ओके ठीक है सर, थैंक यू। ओके। यस अनिल सिंह जी। सर नमस्ते। मेघना जी का, हाँ यस। सर आपने जो लीवर 8 पे लगाया था सर नीडल, वो परपेंडिकुलर लगाया था क्या? हाँ मैंने बस परपेंडिकुलर लगा दिया था। सर परपेंडिकुलर नीडल कब लगाते हैं सर, किस उसमें लगाते हैं सर ये? कभी भी लगा सकते हो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब इवन मेथड जो होना वो, अगर हम हम
लिवर 8 पर लगाएंगे तो टॉनिफिकेशन ही होगा, हम चाहे कैसी भी निडल लगाएं, क्योंकि उसका काम ही है, वो मदर पॉइंट है, मदर टॉनिफिकेशन पॉइंट है। लिवर 8 विल नरिश द, लेकिन रिगार्डिंग टॉनिफिकेशन सेडेशन ये तो हम समझेंगे। किसी भी निडल को आप अगर इन द डायरेक्शन ऑफ मेरिडियन लगाते तो टॉनिफाई होता है, अपोजिट लगाते तो सेडेट होता है, वो कंसेप्ट है। लेकिन अभी हम सिर्फ उसे इवन मेथड लगाएंगे, परपेंडिकुलर लगाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। In the acupuncture, we can put the needle perpendicular. There is no issue. There are many points like gallbladder 41. It's very difficult to put needle in the two direction. ऐसे कई पॉइंट होते हैं, उस पर निडल भर लगा दी ना तो काम हो जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मान लो अब आपको करना ही है तो कंसेप्ट है कि लिवर मेरिडियन ऐसे जा रहा है, उसी डायरेक्शन में निडल लगा दो तो टॉनिफाई हो गया, और उल्टी लगा दो तो सेडेट हो गया। तो वैसे भी किया जा सकता है ना। ओके, मेघना जी, योर क्वेश्चन इज ओवर। सर वो एक क्वेश्चन रह गया था, म्यूट हो गए थे ना हम। हाँ, सर ये लीवर को जब हम कूलिंग करते हैं, मतलब हीट बढ़ता है, लीवर वीक हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि मदर पॉइंट उसको टोन करना है, जैसे लीवर 8। नो 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 नो, लीवर हाँ हाँ, अभी हमने बोला कि मदर पॉइंट तो हमेशा नरिश करेगा। जब गर्मी बढ़ी है, गर्मी को कम करना है, कंट्रोल करना है, तो ग्रांड मदर पर जाना है, मदर पर नहीं। देखो ग्रैंड मदर, सिंपल सी बात है, बढ़ाना है तो मदर पॉइंट। इफ यू वांट टू इंक्रीज, इफ यू वांट टू नरिश, यूज मदर पॉइंट। इफ यू वांट टू डिक्रीज, यूज ग्रांड मदर पॉइंट। ग्रैंड मदर लीवर 4, लीवर क्या 4। क्या करना चाहते हैं आप? व्हाट यू वांट? सर आपने बोला था लीवर 4 और लीवर 8 को यूज करना है जब लीवर को हम ठंडक देना है हमें, तो लिवर में क्या बढ़ाना है? कोल्डनेस बढ़ानी है, कोल्डनेस बढ़ानी। हाँ, लीवर हीट है तो हमें कोल्डनेस बढ़ानी तो है। उसका मदर पॉइंट ले लो। लिवर में 8। ठंडक बढ़ानी है, लिवर में कोल्डनेस बढ़ानी है, तो उसका मदर पॉइंट कौन है कोल्डनेस का? लिवर 4। हमने बोला था लिवर 4 ले लो। फिर प्रश्न, लेकिन आगे चल के आप देखोगे कि प्रोटोकॉल के निर्माण के समय हम लिवर 8 भी बढ़ाएंगे, है ना। मैंने बोला लीवर 4 किसी भी चीज सेकंड को बढ़ाना पॉइंट। है आपको, उसका मदर पॉइंट ले लो, किसी भी चीज को बढ़ाना है। इन द 5 एलिमेंट साइकिल, इफ यू वांट टू इंक्रीज द वाटर, उसका मदर पॉइंट ले लो। यू वांट टू इंक्रीज द वुड, उसका मदर पॉइंट ले लो। जिसको भी बढ़ाना चाहते हो उसका मदर पॉइंट ले लो बस। जैसे मैंने ये चार्ट दिखाया था फॉर एग्जाम्पल, in the liver channel I want to increase the water, I will tonify the mother point liver 4, because this is the mother point of liver coldness। अगर हमने लिवर 4 को बढ़ाया तो लिवर के अंदर ठंडक लेके आएगा, क्योंकि लिवर 4 विल नरिश द वाटर इन द लिवर। क्लियर? यस सर। ओके, यस ज्योति जी। सर नमस्ते, थैंक यू, आपने इतना अच्छा सब समझाया। सर टेंडन्स और ये मसल्स जो होते हैं, जॉइंट्स और लीगामेंट्स, ये लीवर के अंतर्गत आते हैं, राइट? तो हम लोग जो एमआरआई देखते हैं उसमें एमआरआई में जनरली रहता है कि किसी किसी पेशेंट को डीजनरेशन हो गया और नंबर 2 या 3 4 या 5 में फैसेट जॉइंट हो गया और लीगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी हो गया। तो सर उसमें भी लीवर को हम सीडेट करेंगे? तो अब आपने देखा कि लिगामेंट, लिगामेंट क्या है? लिगामेंट है लिवर। लिगामेंट में हाइपरट्रॉफी हो गया। हाइपरट्रॉफी क्या होता है? ये एक्सेस हाइपरट्रॉफी होता है अगर इफ देयर इज हाइपरट्रॉफी इज द फायर। ओके, ये विल कम। किसी भी चीज की हाइपरट्रॉफी होती है ना, ग्रोथ और द हाइपरट्रॉफी। डिजनरेशन, देखो डिजनरेशन मतलब घट गया, है ना।
हाइपोट्रोफी मींस मोटा हो गया खा पी के, अपोजिट है कि नहीं है? यस सर। सो टू अपोजिट थिंग, कि एक तरफ लिगामेंट में हाइपोट्रोफी हो रही है, एक तरफ डिजनरेशन हो रहा है, तो फिर हमें उस तरह से उसे कनेक्ट करना पड़ेगा उस चीज को। बट हाइपोट्रोफी इज द डिफरेंट कंडीशन। सपोज देयर इज अ हाइपोट्रोफी ऑफ द मसल्स, द डिफरेंट थिंग। थिनिंग एंड डिजनरेशन ऑफ द मसल्स, इट इज अ डिफरेंट थिंग। एम आई राइट और नॉट? दोनों अलग चीज है ना? यस सर। दोनों को हम एक चीज कैसे कंसिडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना? तो दोनों में सोच अलग है। किसी भी चीज के हाइपरट्रोफी ऑफ द हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, दैट इज अ डिफरेंट कंडीशन। हाइपरट्रोफी मींस ओवर ग्रोथ। ओके सर। तो इस तरह से वो अलग कंसेप्ट है, तो उसमें घटाना पड़ेगा हाइपरट्रोफी में, है ना? और फिर हम उसे इस तरह से सोचेंगे। बट आई विल टेल यू, we will ask person will tell you 4-5 symptom, and the symptom will help us to make the diagnosis. वो जो सिम्टम बोलेगा ना, उसके आधार पर हमारी डायग्नोसिस बन जाएगी। उसे हाइपोट्रोफी ऑफ द लिगामेंट फ्लेवम ही नहीं होगा, और भी कुछ लक्षण होंगे शरीर। उन लक्षणों हर्निएटेड डिस्क सर, हर्निएटेड डिस्क होता है मोस्टली, हो सकता सिम्टम्स लाइक sciatica। तो मतलब मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना, कि अभी हम नहीं डिस्कस कर सकते वो, है ना? क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ना, दिस इज नॉट TCM लैंग्वेज। साइटिका इज नॉट TCM लैंग्वेज, साइटिका इज द मॉडर्न लैंग्वेज, है ना? TCM में लैंग्वेज क्या होती है? TCM की अलग लैंग्वेज होती है। किसी को लोअर बैक पेन होता है, वी आर टेलिंग मे बी किडनी यंग डेफिशिएंसी, किडनी यंग डेफिशिएंसी, यू डू द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी यंग डेफिशिएंसी, और यू डू द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी लिवर यंग डेफिशिएंसी, लोअर बैक पेन एंड साइटिका पेन विल गो अवे। दैट इज द डायग्नोसिस ऑफ TCM। चाइनीज लोग कभी नहीं लिखते साइटिका पेन, चाइनीज लोग लिखते हैं यिन डेफिशिएंसी, यांग डेफिशिएंसी, यिन एक्सिस, यांग एक्सिस, है ना? तो हमें उसी भाषा में समझना पड़ेगा। वन पेशेंट केम विद अ वेरी सीवियर साइटिका पेन इन द लेफ्ट लेग। मैंने उसको सिर्फ किडनी यांग डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल लगाया, और साइटिका पेन 5 मिनट में चला गया। मैग्नेट लगाया, साइटिका पेन, एक पॉइंट भी साइटिका का पेन का नहीं दिया मैंने उसको, किडनी यांग डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाए, क्योंकि सारे लक्षण किडनी यांग के थे। हाँ, अगर आप साइटिका पेन का ट्रीटमेंट करते रहेंगे, पेशेंट बोलेगा कि जब ट्रीटमेंट करते हैं तो ठीक हो जाता है, बाद में फिर वापस आ जाता है, एक्यूपंक्चर से टेम्परेरी आराम मिलता है, यही बोलता है पेशेंट। घुटने दर्द के लिए नहीं, एक्यूपंक्चर से आराम नहीं मिलता, बस टेम्परेरी मिलता है। क्यों? क्योंकि हम उसे हम अब एक्यूपंक्चर की लैंग्वेज में नहीं समझ रहे हैं उसको। हमें अपनी चीज को अपने ढंग से समझना है, तब हम रूट से ठीक करेंगे, है ना? घुटने का दर्द है तो घुटने का ट्रीटमेंट कर रहे हो, घुटने के आसपास पॉइंट लगा दिए, थोड़ा डिस्टल पॉइंट लगा दिए, पेशेंट बोल रहा है अच्छा लग रहा है, 5 दिन के बाद फिर से दर्द चालू हो गया, कभी ठीक नहीं होगा पेशेंट। इसलिए आज पेशेंट आते हैं हमारे पास, बोलते हैं हमने एक्यूपंक्चर कराया है, लेकिन इसका टेम्परेरी फायदा मिलता है, करो तो अच्छा रहता है, और बाद में वापस हो जाता है। क्यों? क्योंकि डायग्नोसिस का ट्रीटमेंट ही नहीं किया। देयर इज नो many person not doing the treatment diagnosis, they are doing treatment symptomatically. Got it? Yes sir. So symptomatically is a very good treatment, but we have to make the proper diagnosis and do the treatment, then see the wonderful results and the permanent result. Okay? Okay sir, thank you. पेशेंट आएगा कि हमको गोबर चाहिए, हम उसको गाय दे देंगे, चल तुझे खूब गोबर मिलेगा और फ्री में दूध भी मिलेगा। हमारा TCM ऐसा है। पेशेंट मांगता ये, हम उसे और गोल्ड भी देते हैं साथ। पेशेंट मांगता सिल्वर है, हम उसे सिल्वर तो देते हैं, साथ में देते हैं चल ये तू गोल्ड भी ले। ये TCM। यस, वंडरफुल, डन फॉर टुडे। अब मिलेंगे हम, अब तो हमारी फ्री क्लास ओवर, क्योंकि मैंने 5 एलिमेंट्स का वादा किया था लोगों से, कुछ समझा जाएगा। अब हम अगली क्लास हमारी होगी इनरोल पार्टिसिपेंट्स के लिए। Already we have crossed 100 enrolled participants, 100 plus participants enrolled for this course. So now we'll do this course with very good and dynamic energies. And this course included lots of things like auricular acupuncture,
some part of the scalp acupuncture, some part of the great detail of the PM diagnostic part, ready for 9 months now. Okay, अब तैयार हो जाइए सब, अब खतरनाक आने वाला है समय, है ना। तो चलिए आज की क्लास को विराम देते हैं, कपिंग सब कुछ एवरीथिंग। चलो आज की क्लास को विराम देते हैं, अब मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच। गुड, कल मतलब मंडे। गुड नाइट।